hear is, ma'am, I'm not good at English. I'm not able to speak in English. भाई हमें तो हमने मूवीज देखी है, हमने मूवीज में देखा है वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं, वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं. वाओ, दे आर सो गुड. They are not good. Think nothing is impossible. That's a fact. That is something you have been learning since childhood. हाँ भाई. So the question that I continuously hear is, ma'am, I'm not good at English. I'm not able to speak in English. And there are multiple questions which is revolving around कि English कैसे बोले, कैसे सही बोले, sentence framing कैसे करें. And not only in this, talking about specifically IELTS, उसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है speaking में, which is a module in IELTS. ठीक है, if you are not aware of it. So मैम स्पीकिंग आते ही एकदम से डर जाते हैं, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, what to do when it comes to speaking. So today I am here with the solution of all your problem when it comes to speaking. अब ध्यान से सुनना and let's see if you are not good at English speaking, here's how you can do. Okay? Talking about the very first thing कि क्या क्या problem आती है, what exactly, why do people are not able to speak in English properly? Fear of making mistakes. डर रहता है अगर हम कहीं गलत ना बोल दे. मैम हमें डर लग रहा है हम गलत बोल देंगे तो क्या होगा. देखो गलत बोल दोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ बहुत बड़ा नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा क्या बुरा से बुरा क्या होगा बताओ. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करोगे, गलत सेंटेंस फ्रेमिंग करोगे, प्रोनाउंसिएशन गलत बोलोगे. दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू एट द एंड ऑफ द डे, राइट. क्यों डरना है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मैम कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, क्या कर ले. देखो कॉन्फिडेंस मैम ये दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें नहीं दिला सकता एक्सेप्ट यू. इस चीज को याद रखना हमेशा. कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो आप अपने आप को दे सकते हो, एंड चाहे गलत बोलो चाहे सही, हैव दैट काइंड ऑफ एन कॉन्फिडेंस विद यू. थिंकिंग इन देयर नेटिव लैंग्वेज फर्स्ट. भाई हमने मूवीज देखी है, हमने मूवीज में देखा है वो अमेरिकन एक्सेंट में बोलते हैं, वो ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं. वाओ, दे आर सो गुड. दे आर नॉट गुड. एक बहुत ही मिनिमल सी प्रैक्टिकलिटी है जो समझो इधर. To all the Americans out there, to all the Britishers out there, to all those people who are living abroad and who are having this kind of an accent, who are able to speak everything in English. Why? बचपन से सिखाया जा रहा है. They have been in this kind of an environment जहां पे वो छोटे से ही they are able to get all the things, they are able to grab everything, the way they speak, the way they cater to every question, it's inbuilt. Their parents are speaking each and everything, the news that they hear, the songs that they hear, everything is there in English. इसीलिए वहां का छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोल लेता है. समझ में आ रही है बात. Now, not having a conversation partner. I know, I can get this. Over here, we belong to an Indian society जहाँ पे even अगर आप दोस्तों से भी बोलो कि चल भाई इंग्लिश में बात करते हैं, they're gonna make fun of you, right? And yeah, I understand, I truly get it. तो ये एक genuine point है, but ये सारे नहीं है. Trust me नहीं है. कैसे? अब यहाँ पे एक चीज समझना, there are multiple things that depends on your speaking, speaking. ठीक है. सबसे पहले क्या है, whenever you are coming up for a speaking, there are a lot of things. सबसे पहले तो डरना बंद करो. कोई क्राइम नहीं कर रहे हो. आई नो वी आर इन दिस काइंड ऑफ अ सोसाइटी जहां पे वी हैव मेड एवरीथिंग व्हिच इज डिपेंडेबल अपॉन. इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, यू आर नॉट वर्थ इट. इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको जॉब नहीं मिलेगी. अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट डेजिग्नेशन. या आई गेट दैट, बट what exactly that we need to work upon? I understand. I don't want you to live that language entirely कि एकदम ही इंग्लिश में नहीं. Just don't do that. There are certain steps. अगर आप उसको follow करोगे, definitely for sure you will be able to speak in English. अगर आपने follow कर लिया whatever I'm telling you. क्या है वो चीज़ है? सबसे पहले let's talk about the fastest way to improve it. The very first thing, tip number 1. Fluency improves when you speak first and correct later. हमें पहले ही डर रहता है कि अगर हमने गलत बोल दिया तो, हमने किसी चीज को गलत प्रोनाउंस कर दिया तो, हमने इस चीज को गलत कह दिया तो क्या होगा. कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मजाक बनेगा. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर ट्राइंग
Consider yourself supreme. There are a lot over there who are not even trying. समझ आ रही है चीज? There are a lot over there who are just making fun of you. There are a lot over there who are not even trying and who are not even, they don't have even that kind of willingness that you guys are having. So stop blaming yourself and stop feeling ashamed. I know it's very easy for me to say that, but still, just consider what I am saying. फ्लुएंसी इंप्रूव, फ्लुएंसी तब इंप्रूव होते है, आप किसी को देखते हो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हो, यू गेट मेस्मराइज्ड, राइट? यू लाइक वाओ कितना अच्छा, मुझे भी ऐसे बोलना है. कैसे बोलोगे? आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो. जितना ज्यादा, मैम मैं तो इंग्लिश गाने सुनता हूँ, मैं तो इंग्लिश मूवीज देखता हूँ, स्टिल मैं न्यूज पढ़ता हूँ इंग्लिश में, सब चीज तो इंग्लिश में करता हूँ, तब कहाँ दिक्कत आ रही है? आप जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर चीज को फीड करोगे वो चीज उतनी ग्रो करेगी, ये पता है, ठीक है? आप फीड किसको कर रहे हो? लिसनिंग को फीड कर रहे हो, आपकी समझने की एबिलिटी बढ़ेगी. रीडिंग को फीड कर रहे हो, आपकी रीड करने की एबिलिटी बढ़ेगी. स्पीकिंग को फीड करो तो आपकी स्पीकिंग की एबिलिटी बढ़ेगी. समझ में आ रही है वो चीज? लिसनिंग करके, रीडिंग करके आप स्पीकिंग इंप्रूव नहीं कर सकते हो. आई नो विच इज maximum of the population is doing in order to improve their speaking English. What are they doing? They're just feeding on the listening more, reading more, writing more in fact, but not the speaking part. जब तक बोलोगे नहीं पता कैसे लगेगा where are you lacking? ठीक है, अब आ जाओ. Talk to yourself, record your voice or speak with AI tools. Talk to yourself. I know it's not wrong. Again, I'm not recommending कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बड़बड़ाना शुरू कर दो. Don't do that. Your parents will think it's better you don't speak in English rather than having this kind of, it feels like you get possessed or something. Don't do that. Never. It's never my recommendation. You want to talk to yourself, you can talk to yourself. कैसे? I'll be telling you. अब यहाँ पे tip number 2 देख लो एक बारी जरा. Shadowing technique, copy native speakers. Now, this is for those who have the basic knowledge of English. ठीक है? कैसे? Listen to native speakers and repeat after them. अब ये जो पोर्शन होता है ये वहां आता है जहां पे आपको फ्लुएंसी अच्छी है, कमांड अच्छा है, you just want that accent in you so that it's just you want to learn it. एक्सेंट से इंप्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेंट से कंटेंट डिलीवरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्शन से एक्सेंट से द काइंड ऑफ इंटेंशन यू वांट टू प्रोवाइड उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. It's never ever solution that you are very much inclined to accent rather than focusing on fluency. क्यों करना है? एक बेसिक चीज समझो, क्या है? कम्युनिकेट करना है किसमें? लैंग्वेज में. लैंग्वेज है, इसको एज अ लैंग्वेज कंसिडर किया करो. ठीक है? कैसे करना है? थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एस्पेक्ट जो आपको कम्युनिकेट करना है इस लैंग्वेज में. आप हिंदी बोल लेते हो, everyone out here is able to speak in Hindi. क्यों? You've got that kind of an environment since childhood. You've already been into that kind of environment. Your parents speak, your friends speak, your teachers, your each and everything. You listen news in Hindi language. This is the reason. समझो, environment समझो. You cannot grab anything from anywhere. Like एकदम से नहीं आएगा. Time दो उसको. I know there are going to be times जहाँ पे आपको लगेगा you are not even improving. Trust the process. I'm telling you, trust the process. Right? First. Next. Best for improving pronunciation and fluency. If you want that kind of an accent, if you're really good at English, if you have a really great fluency, if you are amazing in that, then definitely go for the TED Talks. Go for news, go for BBC News, go for Tech Talks. You've got n number of speakers out there. You can get the help of any of the social media platform. You can get the help of any of the OTT platforms. You can get the help of anywhere in order to get all these things, in order to pronounce these things. क्यों नहीं हो रहा है? सब होगा, ठीक है? How you are going to do that, that matters. होगा नहीं होगा, that's a different thing. You will be able to speak in English, trust me. And this is not just intended for all the beginners out here, it is intended for all the people who are preparing for their IELTS examination, TOEFL examination, any of their proficiency examination, because proficiency in a particular language has a major module जिसको हम speaking कहते हैं, and that
is important. You cannot run from it. You cannot stay away from it. Instead, just dive deeper into it and learn that. भागना is not a solution, of course. चलो इसी बात पे टिप 3 देख लेते हैं. यहाँ पे देखो क्या लिखा है. Think in English. One of the most important tip that I can ever give to anyone. Think in English. देखो दिमाग खाली तो नहीं रहता है. I know that. Continuously, I mean 24/7, you've got something in your mind going. Right? Okay, so let me get this straight. I was also a novice in speaking English. And now I am an IELTS and TOEFL professor. How that happened? Basically, I know there were times when I've struggled a lot. I was not feeling any sense of improvement in mind. There were times when I used to be embarrassed. Yeah, I was. There was time I used to be like, nahi hoga mere se now. This is not something that I can manage. This is not my cup of tea. This is not something that I can, have a proficiency on, because it's something which is not my root language. My root language is Hindi. I cannot do that. But the fact is, why did I improve? It's because I never have this kind of, thinking that now I've got this proficiency. Now I have full control over English. You can never have control on any of the language. The more you want to learn, the more you're going to get to learn. Think, you have a schedule to deliver. ठीक है? You have your daily routine. है, सबका होता है. ठीक है? Think about it. So, मुझे सुबह 7 बजे उठना है, मुझे इतने टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे बैक पैक करना है, I have to go to school, I have to go to college, I have to go for work, and then मुझे lunch करना है, and then I have to come back from work, and then I have to get my important stuff done. So, instead of that, you can just I have to wake up early in the morning, write it if you feel like. Speak. You have to be your own examiner. जब बोलते हो ना, इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ एन एक्यूरेसी, अगर आप एक्यूरेसी के पीछे ही भाग रहे हो, तो व्हेन यू आर स्पीकिंग, ट्राई टू एनालाइज योरसेल्फ. कितना भी ग्रामर पढ़ लो, कितना भी टेंसेस पढ़ लो, दैट इज नॉट गोना वर्क अंटिल एंड अनलेस यू स्पीक. एंड दैट्स अ फैक्ट. नहीं बोलोगे, इंप्रूव नहीं कर पाओगे, पीरियड. गेटिंग इट? चलो नाउ यहां पे टिप 4 की बात करते हैं. ट्राई द 3 सेकंड मेथड. क्या होता है ये 3 सेकंड रूल, 3 सेकंड मेथड क्या होता है? देखो, डोंट हेजिटेट टू स्पीक विद इन 3 सेकंड. टेक अ टॉपिक, स्पीक फॉर 3 सेकंड्स विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. वी हैव दिस काइंड ऑफ अ टेंडेंसी, पता है हमारी एक टेंडेंसी होती है, हमें ना हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिलीवर करनी है, परफेक्ट डिलीवर करनी है. वी हैव टू बी द क्विंटेसेंशियल ऑफ अ परफेक्शन. नो, यू कैन नॉट, यू कैन नेवर, एंड दैट्स अ फैक्ट. जस्ट हैव टू बी व्हाट यू आर. You can never be an epitome of a perfectionist. Okay? We have got a lot of poets, we've got a lot of authors who are writing the book. None of them consider themselves perfect. Keep on trying. They keep on trying. Okay? So, this is what it is. Take a 3 second rule. Think about a topic. Think about hobby and start speaking for 3 seconds. See what you are coming up with. This actually reduces overthinking and builds confidence, which you are seeking. Trust me, that's going to work. What else is going to work? Learn key phrases and connectors. अब एक चीज देखो, I'll be very clear for that. सबको ये पता है, idiom सबने सुना है. Vocabulary, basic vocabulary, everyone knows, right? आपको बस उसको यूज करके यू हैव टू कम अप विद एन आंसर. दैट्स ऑल. यू कैन गो फॉर मल्टीपल गेम्स. ओके, टेक 3 words. ओके, टेक कैट, डॉग, pencil. Create a story out of it. Sorted. Any 3 word. Important, think, interesting. Take these 3 words, come up with a story. You can do this. Next, instead of memorizing grammar, learn useful phrases. For example, agreeing. That's a great point. Disagreeing. I see your point, but
expressing, in my opinion. Why am I telling you this? Because these are actually very, very, very helpful. Now, what's next? Last but not the least, a final word and a call to action for you guys. If you could wake up tomorrow speaking English fluently, what is the first thing that you would say and to whom? This is your question. I want the answer in the comment section that what is that going to be? If you could wake up tomorrow and get this kind of a thing that you can speak English fluently now, what is that one thing you're going to say to whom? Okay? I know this might be a difficult journey for a lot of you, but trust me, it's not impossible. There's a difference. Catering to a difficult thing and catering to an impossible thing. Nothing is impossible. That's a fact. That is something you have been learning since childhood. ठीक है? But हाँ, difficult हो सकता है, impossible नहीं है. At the same time, important है. आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में चले जाओ, चाहे आप लोएस्ट से लोएस्ट पोजीशन देख लो और हाईएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन देख लो, हर पोजीशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगा, विच इज एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन मिलेगा. सो व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज यू कैन नॉट रन फ्रॉम इट. इट इज अ बेसिक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स अ लैंग्वेज. You need to know how you are going to use this language in order to present yourself. Yeah, that does enhance your personality, no doubt in that part. Okay? And I hope that each and every one of you is going to take this seriously and going to work upon it. Okay? So yeah. Thank you so much everyone. Thank you so much for watching this video. I hope this is going to help you. And please let me know if you have any complaint, anything that's bothering you. Even if you want to have any other suggestion, feel free, drop it down in the comment section. And I definitely want you guys to speak in English seriously fluently. Okay? Chalo, bye-bye. Take care. We'll see you in the next session.